हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज एकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले बायोलॉजी का चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का एक्सरसाइज। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ आपको बाकी के चैप्टर के एक्सरसाइज मिल जाएंगे, तो देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम एमसीक्यू पे। ओके, तो पहला है आपका द मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द थोरैक एंड एब्डोमिनल कैविटी इज। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट ऑक्सीजन हैज टू डिफ्यूज अक्रॉस टू पास फ्रॉम एयर इन द एल्वेलस टू हेमोग्लोबिन इनसाइड अ आरबीसी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 5 ये राइट है। डैश इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए लिनक्स ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज रिलीजिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन एडिशन टू टीवी इज ब्लैंक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आईआरवी राइट है। नेक्स्ट है ब्लैंक मस्क्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मस्क्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका फोर्थ डायफ्राम ये राइट है। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो साइक्लोसिस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बटरफ्लाई वो राइट है। नेक्स्ट डायपेंडिसिस इज परफॉर्म्ड बाय। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वो राइट है, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए नोड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट न्यूक्लियस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ये राइट है। नेक्स्ट है कॉकरोच शोज विच काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। और देखो ये इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी वजह से अगर इसका सर भी कट जाए ना तो ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। क्यों? लेकिन मर क्यों जाता है? रीज़न ये है कि खाना कहाँ से खाएगा, मुंह से ही खाएगा ना, इसीलिए ये मर जाता है। नहीं तो ये 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है, अगर उसका सर वापस लग जाए तो जिंदा हो जाएगा। ऐसा है क्योंकि इसके पास जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायपेंडिसिस कैन बी सीन इन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूरॉन ये राइट है। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा इज गार्डेड बाय। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये स्टेसिन्स वाल्व ये राइट है। नेक्स्ट है ब्लैंक वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट आर्टियल डिपोलराइजेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर पी जो है वो राइट है। ओके, तो लास्ट है हमारा 15 क्वेश्चन द फ्लूइड सीन इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन ह्यूमन इज। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये राइट है। मीन्स हमारा यहाँ पर एमसीक्यू खत्म होते और अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द रेस्पिरेटरी सरफेस टू द ऑर्गेनिज्म इन विच इज इट इज़ फाउंड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा में, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमीबा में लगेगा। ये आंसर का पूरा चार्ट है, देख लो। ठीक है, लंग्स है तो लंग्स लग जाएगा बर्ड में। ठीक है, एक्सटर्नल गिल्स है तो ये लग जाएगा स्लैमेंडर में, इंटरनल गिल्स फिश में और ट्रैचे इंसेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह लग जाएगा। देखो, लेकिन आप आंसर कैसे लिखोगे, जिस तरह मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, उसी तरह इसका आंसर इसके सामने, इसका आंसर इसके सामने। ठीक है, ऐसे ही लिखना एग्जाम में, नहीं तो जो एग्जामिनर है ना वो इस तरह जो लगाते हो ना तो कंफ्यूज होगा और कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, तो उसी तरह जैसे दिखा रही हूँ इसी तरह लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाई डज टार्चिया हैव सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, तो आंसर लिखेंगे द टार्चिया हैज सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एज दे प्रिवेंट द टार्चिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। आंसर लिखेंगे इन इंसेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम एज द ब्लड डज नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बट द टार्चियल ट्यूब्स directly transport oxygen to the entire body. Therefore, respiration is in the insect is called direct respiration. Okay. Third question है why is gas exchange very rapid at alveolar level. Answer लिखेंगे alveolar are lined by a layer of simple squamous epithelial epithelium. This thin single layer of epithelium allows the rapid exchange of gases in alveolar region. Next question है name the organs which prevent that following the entry of food into the trachea while eating. देखो सिर्फ नेम बताने ऑर्गन का, तो ऑर्गन का नेम है एपिलॉगिट्स लॉटिस। ठीक है,
तो ये आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर एंड होता है, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाई इज द एडवांटेजेस टू ब्रीथ थ्रू द नोज दैन थ्रू द माउथ, यानी कि नोज से बेटर, सॉरी माउथ से बेटर नोज में क्यों है, मतलब एडवांटेज क्या है वो बताना है आपको, ठीक है, ब्रीथिंग सिस्टम में। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है, nose filter and warms the inhaled air. Here is the nose prevents the entry of microbes, dust and other impurities which may harm the lungs. Second point है, mouth lacks any such structure for filtering and warming the air that is inhaled during inspiration. Hence, it is advantageous to breathe through the nose than through the mouth. देखो, हमेशा नोज से ही ब्रीथिंग करना बेटर होता है क्योंकि वहाँ पे फिल्ट्रेट होता है, राइट। तो और माउथ से जब हम करते हैं तो फिल्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन जब मजबूरी आती है तो हम मुंह से ही करते हैं। याद रखो, जब आपको कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो आप कहाँ से लेते हो? नाक तो आपकी बंद रहती है, तो मुंह से ही सांस लेते हो ना, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस टाइम मजबूरी रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट इट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों जो इनमें से जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करेंगे, जो करेक्ट है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, तो जो फर्स्ट वाला वो राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला भी राइट है। जो सेकंड वाला बी है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया शुड बी केप्ट ड्राई, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, गिवन बिलो एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, आइडेंटिफाई देम। तो आपका ए दिया गया था, spasmodic contraction of muscle expiration and forceful expulsion of air through nose and mouth, तो क्या आएगा? स्नीजिंग आएगा। बी है, an inspiration followed by many short convulsive expiration accompanied by facial expression, तो ये क्या आएगा? क्राइंग, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर थर्ड का। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, राइट अ नोट ऑन ब्लड प्लाज्मा। ओके, सो आंसर लिखेंगे, ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड corpuscles ऑफ ब्लड सेल्स। प्लाज्मा, इट इज straw colored slightly alkaline viscous fluid, is considered 55% of the blood. Plasma consists of water, protein, albumin, globin, propidine, prothrombin, fibrinogen, inorganic salts, sodium, potassium, magnesium, calcium, ferrous, manganese and chlorine. Okay, food glucose, amino acid, fatty acid, triglycerides, वेस्ट यूरिया, वेस्ट में आता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड एसाइथाइन, रेगुलेटर्स, हार्मोन, एंजाइम्स, विटामिन्स, एंटीकोगुलेंट्स, हेपरिन, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज, डिजॉल्व्ड गैसेस O2, CO2, N2. Plasma consists 90% water, 7 to 8% protein, inorganic salt 1%, and other substance 1.1 to 2%. Blood corpuscles, it's considered 44% of the blood. Blood corpuscles are the 3 types as given below. RBC, रेड ब्लड corpuscles, और या एर्थेरिट्स। RBC, फर्स्ट पॉइंट RBC का, एर्थेरिट्स आर द मोस्ट abundant cells in the human body. Second point, they are circular, binuclear and enucleated in camel and they are nucleated. The red color of RBC is due to an oxygen carrying pigment, the hemoglobin, in their cytoplasm. In males, the RBC count is about 5.1 to 5.8 millions, and in females about 4.3 5.2 millions. The average lifespan of RBC is 120 days. The process of formation of RBC is called arthropoiesis. RBC are produced from hematocytes, blast, reticulates. 8. The arthritis organ of fetus is the liver and spleen, and it is the adult is the mainly the red bone marrow. Vitamin B12, folic acid, and hemoprotein are required for the production of RBC. The old worm out RBC and destroyed in the liver and spleen. Polycythemia is the condition in which is the number of RBC increase, and erythrocytopenia is a decrease in number of RBC. The hormone erythropoietin produced by a kidney cell stimulates the bone marrow for the production of RBC. Mature arthritis is devoid
of nucleus, mitochondria, or other membrane-bound cell organelles is cytoplasm. It rich in hemoglobin and O2 carrying proteinaceous pigment that gives red color to the RBC and blood. It's also contain an enzyme carbonic anhydrase. Erythrocytes are responsible for the transport of respiratory gas O2 and CO2, maintaining pH and viscosity of blood. They also contribute in process of blood clotting. The ratio of the volume of RBC to total blood volume of blood is a hematocyte. It is different for men and women. WBC, white blood corpuscles or leukocytes. Leukocytes are colorless, nucleated and इसका शेप कैसा है, न्यूक्लिएटेड है, याद रखना. एंड अम्यूबिड सेल्स लार्जर देन आरबीसी. आरबीसी से बड़ा होता है, ध्यान देना. दे आर कलरलेस, ये कलरलेस भी होते हैं. इरेगुलर शेप्ड होता है, मतलब इरेगुलर में होता है, ठीक है, रेगुलर में नहीं होता है. न्यूक्लिएटेड सेल एंड शो पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एग्जिस्ट इन वेरिएबल फॉर्म्स. ड्यू टू देयर अम्यूबाइड मूवमेंट they can move out of the capillary walls by process can lipolysis. A normal adult have an average 5,000 to 11,000 WBC per mm cube of blood. Decrease in the number of WBC 400 is called leukopenia, common in HIV, AIDS and TB patient of those exposed to radiation, shock, etc. Temporary increase in the number of WBC is called leukocyte. It is due to infection. It also occurs during pregnancy and in newborn baby. An uncontrolled increase in the number of WBC is a type of blood cancers called leukemia. WBC are mainly concerned with defense mechanism, is that protection, blood plates और या फिर थ्रोम्बोराइट्स. दोनों में से कोई एक भी आएगा तो समझ जाना कि क्या है, ब्लड प्लेट्स की बात कर रहे हैं. ब्लड प्लेटिलेट्स. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है थ्रोम्बोसाइट्स आर सर्कुलर फ्रेगमेंट formed from the large cell called megakaryotes. These are produced in the bone marrow. They are very small, oval-shaped cell fragments without a nucleus. A normal count thrombocytes in human blood is about 2.5 to 4.5 lakh mm³ of blood. If the number of thrombocytes decreases than normal, the condition is called thrombocytopenia. This condition causes internal bleeding, यानी कि hemorrhage. Platelets secretes platelet factors, which are essential in blood clotting. They are also seal the repeated blood vessels by the formation of platelets, fluid या thrombus. They secretes serotonin, a local vasoconstrictor. Function of blood. Blood perform various functions like transport, hemostasis and protection. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो इसका है, फोर्थ का राइट का, ब्लड प्लाज्मा खत्म हो चुका है. फिफ्थ, एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग इन शॉर्ट. सो आंसर लिखेंगे फिफ्थ का. क्लॉटिंग और कोagulation इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड ब्लड इनटू अ सॉलिड फॉर्म. दिस प्रोसेस मे बी इनिशिएटेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड विद एनी फॉरेन सरफेस, मीन्स इंस्ट्रक्शन प्रोसेस of a damaged tissue. Extrinsic process. Intrinsic and extrinsic process involve the interaction of various substances called clotting factors by a stepwise of or cascade mechanism. There are in all 12 clotting factors numbered as 1 to 13 factors. Fourth is not in active use. Interaction of these factors occurs in cascade manner, leading to the formation of the enzyme thrombin. Thromboplastin helps in the formation of enzyme proteaminase. This enzyme activates heparin and it also converts inactive prothrombin into its active thrombin. Converts soluble blood protein fibrinogen into insoluble fibrin. Fibrin forms a mesh in which platelets and other blood cells are trapped to form the clot. तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पे खत्म. नेक्स्ट है सिक्स, डिस्क्राइब पेरिकार्डियम. देखो, पेरिकार्डियम को मैं शॉर्ट में आपको समझा देती. जो हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको ही हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है. आंसर लिखेंगे
The heart is enclosed in a membranous sac called the pericardium. The pericardium is formed two main layers, outer fibrous and inner serous pericardium. Serous pericardium is soft, moist and elastic. It is formed of squamous epithelium and is further divisible into two layers and vascular layer. Parental and vascular layers of serous pericardium are separated by a pericardial space. This space is filled with pericardial fluid, about 50 ml, which acts as a shock absorber and protects the heart from mechanical injuries. It also keeps the heart moist and acts as a lubricant. So next question है हमारा, describe valves of human heart. आंसर लिखेंगे, both the arteria open into ventricles of the respective sides by anteroventricular aperture. The arterioventricular apertures are guarded by cuspid valves. Cuspid valves, these are bicuspid and tricuspid valves. The bicuspid valve, also known as the mitral valve, is present in the left arterioventricular aperture. The tricuspid valve is present in the right AV aperture. Yeah. Eustachian valve, it is present on the opening of the post-caval vein, inferior vena cava. Third है Respiration valve. It guards the opening of the coronary sinus into the right atrium. Fourth है semilunar valve. These three valves guard the opening between the right ventricle and pulmonary artery and left ventricle and aorta. ओके, तो ये हो गया हमारा वेल्व्स ह्यूमन हार्ट का. 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ पेपिलरी मसल्स एंड टेंडाइन इन ह्यूमन हार्ट. आंसर लिखेंगे, द bicuspid and tricuspid valves are connected to cord tendons, which in turns connected to the papillary muscles present on the ventricular wall. Cord tendons and papillary muscles regulate the opening and closing of valves. 9वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर. The factors affecting blood pressure are: first, a cardiac output. The normal cardiac output in 5 liters and increase in cardiac output increases systolic pressure. Peripheral resistance. It's dependent upon the diameter of blood vessels and decreases in the diameter of arterioles and capillaries under the effect of vasoconstrictors like vasopressin of ADH causes increase in peripheral resistance and there be increase in blood pressure. Blood volume. Blood loss in accident decreases blood volume and thus the blood pressure. Viscosity of blood. Blood pressure is directly proportional to the viscosity of blood. Fifth, age. Blood pressure increases with age due to increases in inelasticity of blood vessels. Venous return. The amount of blood brought to the heart via in the veins per unit times is called the venous return. It is directly proportional to blood pressure. Seventh, length of blood vessels. Blood pressure is also directly proportional to the total length of blood vessels. Blood pressure can be also affected by vasoconstrictions or vasodilation. 8वां है gender. Females have slightly lower BP than males before the age of menopause. However, the risk of high BP increases in the females after menopause sets in. तो ये आपका आंसर हो गया 9वें का. किसका? जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर को, कि कौन कौन सी चीज़ें जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट. सो स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. ये इसका पार्ट 1 हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का ये वीडियो. पार्ट 2 जब आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. क्यों? देखो, हम लोग भले ही 2 पार्ट में वीडियो हो रहा है, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर मिलना इंपॉर्टेंट है. और जितने भी मैंने आंसर बताए हैं आपको, वो आपको बहुत ही ईजी वे में प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है. वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ठीक है, ओके. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना आपकी वीडियोज़ के लिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल रखूँगी मैं. ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो है हमारा. पार्ट 2 जब आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 देखेंगे. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. सब्सक्राइब करके रखो, जब भी पार्ट 2 आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा.